सो गोइंग फॉरवर्ड एक सीमलेस कस्टमर जर्नी का फायदा क्या है? Why should we invest our time and effort and maybe some money as well into omnichannel marketing? So using this strategy, what you can do is I'll highlight the last one first, that you will have better and improved brand consistency and recognition. आप अपने ब्रांड को जो है ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसकी ब्रांड रिकॉल को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं विद इन omni channel marketing strategy. Similarly, you will have higher customer satisfaction and loyalty. तो आप customers जो है वो बार बार आपके पास आएंगे. You'll have increased conversion rates and revenue, and you'll have better customer retention through personalization. So these are some of the benefits of omnichannel marketing. So again, I've spoken a bit about Apple. Again, similarly, I think another great example of omnichannel marketing is by Nike. Look and feel of the retail stores throughout the country or throughout the world. But it does not stop here. आप जब उनकी digital presence को देखेंगे तो you'll also see that the digital presence also kind of matches the retail store environment as. So एक तो आपकी branding और design की बात आ गई जिसके अंदर, for example, यहाँ पे जो screenshot है, you can see that the store has very colorful items जो mannequins को इन्होंने पहनाए हुए हैं. But then you'll also see a lot of color in their website as. यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, it's very colorful. The very opposite can be said about Apple, जिस तरह हमने बात की. It's very white, it's very bright, और जो है एक different आपको एक feel जो है वो दे रहा हो. So that's just the look and feel of it, but it does not stop with the look and feel of the website and the retail store. What they do is they also integrate their mobile app, website, and in-store experience seamlessly. And in some stores, Nike के कुछ stores के अंदर आपको नजर आएगा कि they have computers available within the store, जहाँ पे आप जो है of course अपने retail store के अंदर भी अपनी चीजें देख सकते हैं, but आप जो है website के अंदर भी उसको उधर ही एक store के अंदर ही उसको browse कर सकते हैं उनके सारे कैटलॉग के अंदर. Similarly, they have some items जिसको उन्होंने डिस्प्ले किया होता है, but it says कि you can only get them ordered online. और ये नहीं कि आपको घर जाके उसको ऑनलाइन करना है. You are able to get them ordered from within the store, either using your app or the computers at their stores, or get them delivered to either your home or even the store. So again, इन्होंने क्या किया हुआ है कि सारी चीजों को interconnect. And how do they do it? As soon as you walk into the store, आपके साथ जो रिटेल के जो सेल्स पर्सन्स हैं जो आपसे बात करते हैं, तो आपसे जो चीज पूछते हैं, so if they ask for your email, so they are able to get your digital profile fetched from the Nike website. अगर आपका already जो है उसके ऊपर account हो, अगर नहीं हो तो they still use the email to create a guest ID for you. और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी वेबसाइट पे जाके जो है अपने उस ईमेल के साथ लॉग इन करते हैं, तो दे नो एंड दे आर एबल टू ट्रैक you visited the physical store X number of days ago. So they keep that data and of course use AI and data mining to personalize your visit to the store and to the website. Similarly, one thing that they also do is that they have mobile apps for their sales representatives, जिसके ऊपर जो है वो आपसे बात करते करते आपको चेकआउट कर सकते हैं. आपको जो है वो POS के ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा. So उन्होंने एप्स को भी जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है. So that journey, that customer journey can be both ways. So for example, आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो जो है एक वेयर हाउस या स्टोर से आपको शिप होता है, आप जो है उसको आपके घर पे पहुंच सकता है, आप उसको स्टोर से पिक कर सकते हैं या किसी ऑथराइज्ड रिटेलर से भी उसको पिक कर सकते हैं. And it can go the other way around as well, where you can buy in the store, और उसको जो है आप उधर ही स्टोर के अंदर जो है उसको मोबाइल POS के जरिए आप उसकी पेमेंट करें via their customer representatives and have it shipped to your home, or maybe pick it up within the store or another store जो कि आपके करीब हो. So इन्होंने सारे अपने एक्सपीरियंस को, बाइंग एक्सपीरियंस को जो है वो इंटरकनेक्ट किया हुआ है. So you have multiple touch points via वो ऐप हो, via वो जो है वो उनकी वेबसाइट हो या रिटेल स्टोर हो. Everything is interconnected. And of course, इसमें सबसे सिंपल जो बात होती है, which I think everyone will be doing already, is stock management. So आपकी जो stock management है, वो तो of course सारी integrated होती है. As soon as you sell an item on your physical store, automatically आपके online inventory से भी जो है एक चीज कम हो जाती है.
So that's the basics of it. इसको आप जो है ज़्यादा integrate. Another great example of omni-channel marketing जो है वो है Target. Target is a huge retail store of the United States. और what it uses is कि वो AI driven personalization को use करते हैं उनके customers को. और again similarly to Nike, what they do is कि हर जो उनका कस्टमर होता है उनको वो एक गेस्ट आईडी जो है वो असाइन करते हैं. So even if you don't have a profile on Target or Target website, they assign you a guest ID, एक user ID बना के वो आपको असाइन करते हैं. And सारा डेटा जो है आपकी शॉपिंग हैबिट्स, आपकी interactions either in the physical store or online, they keep that data tied to that guest ID. और उसके थ्रू जो है वो ऑफ कोर्स AI और डेटा माइनिंग और जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज करते हुए they use that to personalize the shopping experience to you. And honestly, ये जो है थोड़ा बहुत जो है in the last few years this has gone maybe a bit too far. जब Target जो है एक controversy के अंदर जो है आया, where Target was showing ads of diapers, for example, to a teenage girl, और upon inquiry टीनेज गर्ल ने उनसे पूछा कि जी आप मुझे डायपर के एड्स क्यों दिखा रहे हैं बार बार. तो टारगेट सेड के आप प्रेग्नेंट हैं तो इस वजह से हम आपको डायपर के एड्स बता रहे हैं, सो दैट once you give birth to the baby आपको ऑफ कोर्स इस चीज की जरूरत होगी. एंड द टीनेज गर्ल सेड कि नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ. एंड अपॉन इंक्वायरी इट फाउंड के टारगेट has been collecting data on the shopping behaviors of that girl. And उसकी shopping behavior जैसे जैसे change हो रही थी, they were predicting, their AI model was predicting that this girl is pregnant, and it happened to be true as well. So again, it can get a bit dark as well, since we are in the AI and data mining era now. But again, this is the level of personalization and the level of omnichannel that these companies are using. So understanding customer behavior and journey mapping. So for a successful omni-channel marketing strategy, आपको जो है अपनी customer behavior और उनकी journey को map करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. What you need to do is to track your customer behaviors across devices and platforms. तो सबसे पहले तो आपको of course ये करना है कि जिस तरह मैंने बात की टारगेट की या नाइकी की, what they do is कि they assign a guest ID to each visiting customer. So you can do something similar. Even if your customer is not registered, you can collect data on your customer based on either your own guest ID or easily via their social network accounts, जिसके अंदर जो है आप उनको पिक्सल के थ्रू या किसी और तरीके से जो है उनकी एक ID जो है वो ग्रैब कर सकते हैं. And then start building data based on that pixel or that data or that ID. You can use a lot of tools to track their journeys. So again, I'm very sure people would be using Google Analytics. लेकिन उससे ज़्यादा जो है आप Hotjar use कर सकते हैं, which is basically telling you the customer behavior on your website. And you can use mobile app-based apps और टेक्नोलॉजीज जिसमें आप कस्टमर जर्नी को देख सकते हैं. यू कैन ट्रैक कि आपको कस्टमर कहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे वो जो है कार्ट को अबैंडन कर रहा है, एंड देन यूज these data points to map out the customer journey from awareness to conversion और अपनी conversions को maximize कर सकते हैं. How can you integrate online and offline channels? Again, जिस तरह हमने बात की, brand and design I think comes first in omni-channel marketing. So making sure that all of your designs, whether it's offline, whether it's online, whether it's digital, whether it's traditional, follow your branding guidelines very strictly. So I think that this is really important. And then आपका जो customer experience है, आपकी जो customer journey है, that should also match the same everywhere. So you should have a document which explains your ethos, which explains your customer policy, which explains your tone of voice. Tone of voice is basically a document या
गाइडलाइन होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी जो कंपनी है या जो हमारा बिजनेस है वो कैसे फॉर एग्जांपल बातें करते हैं एंड देन यू कैन ट्रेन योर स्टाफ and your customer management team, yeah, customer representatives to adopt that tone of voice. So yeah, so talking about offline and online channels, आपकी जो websites हैं, आपकी जो mobile apps हैं, these should be optimized and these should be user friendly. And similarly, आपका जो physical store है, उसके अंदर if you can enable omni-channel checkouts or digital in-store experiences. Similarly, retail science is a real science. जिस तरह आप अपने वेबसाइट और अपनी मोबाइल ऐप को जो है ऑप्टिमाइज करते हैं टू मेक श्योर दैट कस्टमर जो है वो डिफरेंट पेजेस से ड्रॉप ना हो. सिमिलरली जो है आप अपने फिजिकल स्टोर्स को डिजाइन कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज देयर कन्वर्जन. यू पुट योर हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स एट द बैक ऑफ द स्टोर ताकि जो है कस्टमर जो है वहां से गुजर के बाकी आइटम्स को चेक करते हुए जाए और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल करें. सिमिलरली योर सोशल मीडिया ऑफ कोर्स शुड बी एंगेजिंग, हैव एंगेजिंग कंटेंट, लेकिन इट शुड आल्सो डायरेक्ट सेल्स और कनेक्टेड हो आपकी वेबसाइट से. So just looking at Shopify और Shopify जो है enables you to connect your social media channels to your website, e-commerce की जो वेबसाइट है, and people are able to place directly from Shopify or from your social media और वो जो है of course reflect होती है Shopify के अंदर. So that's a great example of how you can use omnichannel to integrate your social media with your website. And lastly, selling on platforms like Daraz should also give a very similar customer experience to your clients, even if they are shopping on marketplaces like Daraz or even OLX. So again, branding की बात आ गई, making sure that your header, your look and feel of the shop जो है that matches as much as possible to your website itself. What is the role of AI and personalization in omni-channel marketing? So AI driven recommendations जो है वो बेहतर user experience को of course वो कर सकते हैं. Again, as I said, you can use Pixel, you can use guest ID or even proprietary. आप अपना input भी बना सकते हैं to collect data on your visitors and then use that data to personalize their shopping experience. So just imagine if you have a store और वहाँ पे आपका एक regular एक customer आता है और उसका स्टोर का लेआउट जो है वो उसकी शॉपिंग एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो चेंज होता हो. सो आप जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप उस अपने प्रॉफिट्स को फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कस्टमर. You can use chatbots for automated customer service. Again, great example of AI हम use कर सकते हैं. There are a lot of options out there जिसमें आप अपने chatbots को train कर सकते हैं specific tone of voice के अंदर and अपने specific products के अंदर और giving a much faster response to your customers. And there are chatbots available जो कि आपकी sales को भी maximize करते हैं. So for example, if someone is asking about specific product from the chatbot, what it can do is कि वो उनको maximum जो है वो support दे सकता है about that customer, but then also suggest or recommend other products as well. So AI chatbots are a great example as well. And then lastly, data-driven marketing strategies आप use कर सकते हैं to retarget your ads और अगर abandoned carts हैं उसको भी आप retarget कर सकते हैं अपनी ads को. Social commerce, again हमने हल्की सी बात की on social media, लेकिन best practices for selling on Daraz, Instagram, TikTok. लेकिन so one thing of course what you can do is कि आपकी जो अगर आपकी ऑलरेडी एक e-commerce की स्टोर है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद योर सोशल मीडिया एंड यू शुड. बट देन अगेन जिस तरह यहाँ पे एक दो ऑडियंस ने जो है बात की हुई है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. यूजुअली माय सजेशन टू अ लॉट ऑफ ई-कॉमर्स पीपल इज कि आप जो है स्टार्ट करें फ्रॉम सोशल कॉमर्स. सो सेलिंग ऑन सोशल इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स और आई रियली रिकमेंड लोग कि स्टार्ट करें सोशल कॉमर्स से. So what is social commerce? How do you do that? एक WhatsApp का आप WhatsApp for business बनाएं, उसके ऊपर आप अपना
कैटलॉग डालें, मेकिंग श्योर दैट यू हैव वेरी नाइस पिक्चर्स ऑन योर कैटलॉग, और उसके अंदर उसकी प्राइस हो, उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन हो, एंड जस्ट यूज दैट एज योर स्टार्टिंग ई कॉमर्स स्टोर, क्योंकि आप उसके अंदर चेकआउट भी कर सकते हैं, एंड देन मे बी सिंस ऑलरेडी इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, लेकिन मे बी इन सम टाइम इट मे एक्चुअली लॉन्च इन पाकिस्तान एज वेल, people will be able to pay using WhatsApp as well. So again, WhatsApp is a great tool to get your store up and running. Similarly, you should also look at the power of influencer partnerships or user-generated content as well. Influencers, I'm sure everyone knows, are people who have an influence over their audience. इसके अंदर हमारे पास सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स आ जाते हैं, तो उनके साथ आप पेड पार्टनरशिप्स कर सकते हैं. बट देन ऑल्सो यूजर-जनरेटेड कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो आपसे परचेजिंग कर रहे हैं, उनको भी आप जो है इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो जो है वो कंटेंट आपको बनाए. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, और उस जब आप उनको ऑर्डर डिलीवर करते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मे बी ड्रॉप ए स्मॉल कार्ड इन विद योर ऑर्डर, जिसके अंदर आप उनसे एक रिव्यू लेते हैं और उनसे आप कहते हैं कि भाई आप एक रिव्यू बनाएं, maybe an unboxing video, maybe a picture review, and post it on our Google, on our TripAdvisor. If you are in the tourism business, अगर आप कोई products वगैरह करते हैं तो different websites हैं जहाँ पे लोग reviews डालते हैं. Especially Amazon है, अगर आप Amazon करते हैं तो वहाँ पे लोग reviews डालते हैं, और even your website as well, या Facebook वगैरह. तो वहाँ पे अगर वो आपको review डालते हैं, अगर आप कोई specific hashtag है उसके साथ उसको post करते हैं, so what you can do is give them some discount on their next purchase. So इस तरह जो है आप यूजर जनरेटेड कंटेंट को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, एंड देन वंस यू हैव दैट कंटेंट, कैन यूज दैट इन योर डिजिटल एड्स, व्हिच कैन गिव यू ए मच बेटर ROI और काफी लोअर कन्वर्जन रेट्स व्हेन यू यूज दैट कंटेंट एज अपोज्ड टू द कंटेंट दैट यू मेक योरसेल्फ. So again, very very powerful tool, user generated content. If you are able to collect data from your customers, so you can use that data to retarget your offers and your products to customers with personalized email campaigns. Customer behavior के ऊपर उसको आप personalize कर सकते हैं. You can also use, again, since we are in Pakistan, and SMS honestly is a very powerful tool, और APIs जो है वो available हैं पाकिस्तान के अंदर. You can use SMS to marketing for cart abandonment, recovery and promotion. So for example, again, I'm very sure most of you would know, लेकिन अगर कोई कस्टमर जो है वो कार्ट के अंदर कोई चीज डाल के फिर उसके अंदर बाद जो है वो वेबसाइट क्लोज कर देता है, so if you are able to collect that data, आप जो है उसको SMS जो है फॉर एग्जांपल सेंड कर सकते हैं, या अगर उसने ऑलरेडी एक ईमेल जो है उसके अंदर पोस्ट की हुई है इन द चेकआउट और फिर बंद कर दिया है, so you can send them an email कि जी आपका कार्ड जो है उसके अंदर XYZ प्रोडक्ट पड़ी हुई है, और you can continue on your order, or maybe even also offer them some discount to make sure that they complete that purchase. Similarly जो है आप automation tools को भी use कर सकते हैं for effective retargeting. And lastly, paid advertising and SEO आप use कर सकते हैं for omni-channel success. Of course, Google ads and Facebook ads for targeted marketing and remarketing. So as हमने बात की of SMS, WhatsApp and email to cover abandoned carts, you can also use retargeting to जो आपके customers आ रहे हैं, if you are using pixels, what you can do is you can retarget those ads to them on their social networks. Of course, SEO is really important for organic traffic across search engines and social platforms, and making sure that आपके जो ऑर्गेनिक SEO है या आपके पेड एड्स हैं, वो दोनों जो है have a synergy between both. So your organic ads जो हैं या ऑर्गेनिक कंटेंट और आपका पेड कंटेंट जो है वो अगेन आपकी ब्रांडिंग को फॉलो करे and make sure that they very similar look and feel.